Bismillahirrahmanirrahim. Paper C, Cytology, Genetics and Evolution. From the portion Cytology, Chapter A, Cell Organelles. First one topic is cell membrane, plasma membrane or the plasma lemma. The cell surface is bounded by selectively permeable, thin, elastic and porous membrane that is known as the cell membrane or the plasma membrane. About the structure of the plasma membrane, different theories were proposed by different scientists. First one is the bimolecular lipid layer proposed by Gorter and Grendel in 1925. Suggests that a membrane is made up of two layers of lipid molecule. The hydrophobic ends point toward one another while the hydrophilic ends point to the outside. Second is the trilaminar structure proposed by Danieli and Davison in 1935. According to this structure, the bimolecular lipid layer is sandwiched between two protein layers. This is the phospholipid bilayer, bimolecular lipid layer, and these are the protein layer. So the phospholipid bilayer is sandwiched between these two protein layers. Next is the fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson in 1972. This is the most acceptable model for the structure of plasma membrane. According to this model, the proteins are embedded in the lipid bilayer, or it can also be defined as membrane is a sea of lipids in which protein floats. The chemical composition of the plasma membrane, it is three main components. Lipids approximately form 20 to 40%, protein 60 to 80%, and small amount of carbohydrate present in the form of glycolipids and the glycoproteins. The proteins present are either the peripheral or the extrinsic protein. They are present on the periphery or the boundary or the ends of lipid bilayer. Another one is the integral or the intrinsic protein. The integral or intrinsic protein are placed in such a way that they extend from one end of the lipid bilayer to the other end. This integral or the intrinsic protein may be either protein channels or the carrier protein. Types of proteins: the channel protein, they opening in the center and they can act like a gate. This is the example. ये प्रोटीन हमेशा इसी तरह इनका स्ट्रक्चर रहता है या शेप रहती है. जब कभी मॉलिक्यूल्स ने पास होना हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इनकी शेप में कभी भी चेंजेस नहीं आती. फॉर एग्जांपल, ये मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं तो ये एज अ पोर या एज अ गेट काम कर रहा है. शेप में कोई चेंजेस नहीं आ रही. मॉलिक्यूल ईजिली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड पास हो रहे हैं. कैरियर प्रोटीन जो खुद मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड चेंजेस आल्सो अकर इन इट्स शेप टू अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट. अब ये मॉलिक्यूल ने मेम्ब्रेन से पास होना है तो ये हमारे पास प्रोटीन की शेप इस टाइम पर ऐसी है कि एक एंड से क्लोज है, दूसरा एंड ओपन है. तो जो एंड ओपन है उस पर आके ये मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं. आहिस्ता आहिस्ता शेप में चेंजेस आने लगती हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस फर्स्ट वाला जो एंड है वो दोबारा क्लोज हो जाएगा हमारे पास और ये जो सेकंड एंड है ये ओपन हो जाएगा. सो इस वे में मॉलिक्यूल जो हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड मूव करते हैं. सो इनकी शेप में चेंजेस आती हैं और ये मॉलिक्यूल्स खुद लेकर कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. Therefore, they are known as the carrier proteins. Cholesterol also present, and this is the cytoskeleton filaments, that is the microfilaments and intermediate filaments. Functions of the plasma membrane. First important function is the transport. It is known as the selectively permeable membrane because it allows the passage of molecules according to the need of the cell. Differentially permeable. The lipid bilayer allow the transport of only non-polar molecules across the membrane. Extrinsic proteins, they function as a receptor site. They receive the stimulus from the environment and thus inform the cell to respond. And another one is the intrinsic protein, that may be either channel or carrier. They regulate the passive and active transport. What is passive transport? The transport of molecules across the membrane along the concentration gradient means from higher to lower concentration without the utilization of energy is known as the passive transport. What is the active transport? The transport of molecules across the membrane against the concentration gradient means from
lower to higher concentration with the expenditure of energy is known as the active transport. Another function of the plasma membrane, that is the cytosis, when the material are transported through the formation of vesicles or vacuoles inside or outside the cell, then it is known as the cytosis. That is, if the molecules are moving outside the cell, this is known as exocytosis. Usually waste materials are passed out by means of this process, exocytosis. And endocytosis, the movement of molecules inside the cell through the formation of this vesicle. Endocytosis may be either phagocytosis, moving in or taking in of solid particles, and pinocytosis, the taking in of liquid particles. Another function is the homeostasis, to maintain the equilibrium or balance. Plasma membrane, by regulating the movement of water, biomolecules and ions, it maintains the equilibrium or help to maintain homeostasis. Mechanical support, the plasma membrane provides structural support to the cell. It tethers or ties the cytoskeleton, which is a network of protein filaments inside the cell that hold all the part of the cell in its place or position. This gives the cell its specific shape. Second topic, cell wall. It is present outside the cell membrane in case of plant cells. It is non-living but secreted by the protoplasm, living part of the cell. Structure, the cell wall consists of three main layers. The first one is the primary wall. It is first formed, means जब cell wall की formation start होगी तो primary wall पहले बनती है. It is thin, elastic and capable of extension, means ये extend होगी, elastic है तो ये इसके extend होने की वजह से space create होगी ताकि इसके बाद secondary wall बन सके. Chemically composed of cellulose, hemicellulose and pectin. Second wall is the secondary wall formed on the inner side of the primary wall, composed of cellulose, hemicellulose, lignin and salts of calcium, magnesium and potassium. Secondary wall is thick and rigid. Third one is the middle lamella. It is made up of pectin or pectinase or pectic compound. The function of middle lamella is it cements together the neighboring cell. Diagram of the structure of cell wall. This is the primary wall, then the secondary wall, and in between the neighboring cells the layer present is known as the middle lamella. The function of it is it holds together the neighboring cells. Chemical nature of the cell wall. First important component, cellulose. It is a carbohydrate polysaccharide made up of many glucose units. The glucose are linked together by beta glycosidic linkage. Second is the hemicellulose. It is also a group of polysaccharide made up of different sugars, for example xylan, mannans and glucans. Third one is the pectin or pectinase or pectic compound. They are closely related to the hemicellulose. They are amorphous and hydrophilic. Amorphous means do not have any specific shape. It is a cementing substance, a main component of the middle lamella. So it helps the middle lamella to cement together the neighboring cells. Next component, lignin. It is a polymer of high carbon content that is distinct from the carbohydrate. Means organic compound है लेकिन carbohydrate के अलावा मुख्तलिफ किस्म के organic compound से मिलके बना हुआ है. It is hard and tough, found in the woody tissues of the plants. The deposition of the lignin process occur in the plant, which is known as the lignification. Next, cutin, suberin and waxes. These are the fatty substances. Suberin, it is present in the cork cell of periderm, prevent loss of water. Cutin, it is present in the cuticle layer of leaves, stems, flowers. The function of cutin is it prevents excessive loss of water from the aerial parts of the plants. Next is the gums and mucilage. Gums are related to the pectic substances and swell up in water. Why they appear in plants? Due to the breakdown of wall and cell content. The process is known as gummosis. Another is the mucilage. When cellulose change into a slimy substance, it is known as mucilage. It is normally used to store water in tissues of plants. Plasmodesmata. The connection between cell to cell is known as plasmodesmata. These are two cells that are connected by the presence of
pits in the cell wall so makes the connection known as the plasmodesmata. The plasmodesmata are considered as the extensions of the endoplasmic reticulum as ER appear to be connected with the plasmodesmata. Functions: plasmodesmata help in the transportation and the conduction of stimuli. Now the thickening of the cell wall. The secondary thickening due to the lignification means lignin deposition, is uniform all around the cell, but in the case of tracheids and vessels, the thickening is localized in specific areas. Due to secondary thickenings of the lignin in the plant, various patterns may be formed. First one is the annular. ये जो लिग्नन की डेपोजिशन है रिंग शेप में हो जाती है एंड दीज रिंग्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर. अच्छा जी, व्हेन द लिग्निन डेपोजिशन इज़ इन द स्पाइरल शेप, ये स्पाइरल शेप की डेपोजिशन हो रही है लिग्निन की. डेपोजिशन ऑफ लिग्निन इन द स्क्लेरी फॉर्म व्हेन इट लुक लाइक अ लेडर, वो ऐसे उसकी डेपोजिशन हो गई है लिग्निन की, वो देखने में बिल्कुल लेडर के जैसा लग रहा है. रेटिकुलेट मीन नेटवर्क लाइक व्हेन द लिग्निन डेपोजिशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क. And when the entire surface of the cell wall is thickened, leaving some unthickened areas, यानी कि सारी की सारी इनर सरफेस ऑफ सेल वॉल थिक हो गई है, सिर्फ कुछ सर्कल शेप में शो किए ये एरियाज अनथिकन रह गए हैं. दैट इज नोन एज पिटेड. Now what are pits? The secondary cell walls are characterized by the cavities or the depression known as pits. ये जो कैविटीज़ और पिट्स हैं ये प्राइमरी वॉल में भी अराइज हो सकती है, ये सेकेंडरी वॉल में भी हो सकती है. अच्छा जी, जब प्राइमरी वॉल में ये अराइज होगी तो जिस जगह पर पिट्स अपीयर होते हैं वो रीजन जो है वो प्लेस जो है सिर्फ और सिर्फ थिन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर प्राइमरी वॉल जो है वो कॉन्टीन्यूस रहती है. ये प्राइमरी पिट फील्ड्स कहलाते हैं. सेकेंडरी वॉल में जब कैविटीज़ और डिप्रेशन अपीयर होते हैं यानी पिट्स अपीयर होते हैं तो वहाँ पर सेकेंडरी वॉल में ब्रेक आ जाता है, यानी उस रीजन में सेकेंडरी वॉल बिल्कुल ही एब्सेंट होगी. So these are known as the pits. The substances pass through the pits from cell to cell, mean the connection formed is plasmodesmata. The two basic types of pits, simple pit and border pit, and this one is the simple pit. The secondary wall are deposited in such a way that it does not overarch the pit cavity. ये रीजन जहाँ पर ये कैविटीज़ डिप्रेशन अपीयर हो रहे हैं ये हमारे पास पिट कैविटी कहलाती है. अच्छा, ये सेकेंडरी वॉल है जिसमें लिग्निन की डेपोजिशन हुई हुई है. इस रीजन पर हमारे पास सेकेंडरी वॉल बिल्कुल ही एब्सेंट है. अच्छा, इस रीजन में भी हमारे पास एब्सेंट है. दोनों पिट्स में फ़र्क ये हमारे पास यहाँ पर जो सेकेंडरी वॉल में हमारे पास डेपोजिशन हो रही है, पिट्स अपीयर हो रहे हैं, ये बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में है. लेकिन इस केस में हमारे पास ये कैविटीज़ इस फॉर्म में अपीयर हो रही हैं कि ये जो हमारे पास है एक बॉर्डर लाइक कह लें या आर्च कह लें या हुड लाइक स्ट्रक्चर, हमारे पास कवर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है. सो द सेकेंडरी वॉल develop over the pit cavity to form an overarching hood with a narrow pore in the center. पोर इसकी बात कर रहे हैं, पिट कैविटी के जॉइंट पे ये पोर्स प्रेजेंट है. अगेन जी, द सेकेंडरी वॉल है मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल. हमारे पास सेकेंडरी वॉल में ये डेपोजिशन हुई हुई है. कुछ एरिया में हमारे पास कैविटीज़ और डिप्रेशन होते हैं, ये पिट्स कहलाते हैं. ये एरिया हमारे पास पिट कैविटी कहला रही है, अपर्चर कहते हैं ओपनिंग को. सिंपल पिट्स वो है जब हमारे पास सेकेंडरी वॉल उस कैविटी के ऊपर कोई हुड लाइक स्ट्रक्चर, कोई कवर लाइक स्ट्रक्चर या बॉर्डर नहीं बना रही, ये सिंपल पिट्स हैं. इस केस में हमारे पास सेकेंडरी वॉल पिट्स के ऊपर ये कवर लाइक स्ट्रक्चर कह लें, हुड कह लें या बॉर्डर कह लें, वो अपीयर हो रहा है. नाउ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बॉर्डर पिट. दिस इज द पिट मेम्ब्रेन, पिट बॉर्डर, दैट इज द अपर्चर और ओपनिंग, टॉरस. In some plants, pit membrane of a border pit pair is thickened in the center in the form of a disc. This thickening is known as the torus. The function of torus is it controls the movement of water between the trachary elements, mean tracheids. Next is the cytoplasm that is present inside the plasma membrane. It is colorless, semi-transparent and semi-fluid. Cytoplasm shows streaming movement that is known as the cyclosis. It forms the ground substance in which cell organelles are present, and the first step of respiration, glycolysis, it takes place in the cytoplasm. Chemical composition: 90% water, proteins, carbohydrates, lipids, salts, nucleic acid and enzymes. And there are two parts of the cytoplasm: ectoplasm that is situated along the plasma membrane and endoplasm
दैट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। इसके बाद आप लोग इसमें से साइटोप्लाज्म टॉपिक अगर आप लोगों के पास आ जाए क्वेश्चन पेपर में, तो फिर इसमें आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दें जो सेल ऑर्गेनेलिस आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं, वो अभी आगे हम पढ़ते जाएंगे वन बाय वन। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म में आप लेंगे तो हर एक का थोड़ा थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन दे दें सिर्फ।